Yes, so now questions of 1 and onto function. But before question again देख लेते हैं definition. हम already last video में कर चुके हैं. Definition is x1 not equal to x2 implies f of x1 not equal to f of x2 or f of x1 is equal to f of x2 implies x1 equal to x2. Then we say function is 1 okay, ये था 1 का definition. And onto के लिए definition एक तो हम ये यूज कर सकते हैं कि range of function is equal to codomain of function, और second thing, for every y belongs to codomain of a function there exists x belongs to domain of a function such that fx equal to y मीन्स आपके कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स अगर कोई x के डोमेन की इमेज है अंडर f देन वी से द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. बराबर. तो ये 1 एंड ऑन टू का डेफिनेशन था. अब इससे रिलेटेड पहला एग्जांपल दिया है हमको. एग्जांपल नंबर 7 इज let A be the set of all 50 students of class 10 in a school. Means in set A there are 50 students. Function f is from set A to set of natural number is defined by fx is equal to roll number of student x. Question is show that f is 1 but it is not on 2. Now 1 means different element than different images. Now what we know that if student is different then roll number is also different. बराबर. तो सबसे पहले हम जो जानते हैं उसका यूज करके 1 प्रूव कर लेते हैं. तो different students have different roll numbers. Different student have different roll numbers and therefore f is 1. Second, prove it is not onto. So for onto, let me assume, बराबर, we assume that roll number start from 1 to 50 because actually we have set which contain 50 students. So we assume that roll number start from 1 and it is continuously up to 50. It means 51 is not roll number. 51 is not roll number of any student. 51 जो है वो किसी स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं होगा. बराबर. So 51 is not a roll number of any student and it means 51 is not in range of a function. तो 51 एक ऐसा नंबर है नेचुरल नंबर का जो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है. एंड सो व्हाट वी से f is not on to. बराबर. ये जो आपका फंक्शन है वो on to नहीं है. Next one is example number 8.
and it is show that function f from n to n given by fx equal to 2x is 1 1 but not on 2. तो यहाँ पर हमको फंक्शन दिया गया है वो n to n है और फंक्शन का फॉर्मूला दिया गया है fx is equal to 2x. This one is 1 1. So let x1 x2 belongs to n and f of x1 is equal to f of x2. Now f of x1 means 2 times x1, f of x2 means 2 times x2. So 2x1 equal to 2x2 and therefore x1 equal to x2 and x1 equal to x2, it means f is 1 1. बराबर, तो ये हमने प्रूव कर दिया फंक्शन 1 1 है. अब on 2, तो for that we use range of function. तो for that here domain is given. बराबर, क्योंकि हमको डोमेन n दिया है तो उसके एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं और कम से कम 5-6 एलिमेंट्स तो लिख ही सकते हैं. तो डोमेन ऑफ फंक्शन इज गिवन n, that is 1 2 3 4 5 and continuous, and now we find values, that is image. Here formula is given by 2x. So what is range of a function? If we select 1 then our answer is 2, if we select 2 then answer is 4, 3 then answer is 6, 8 and so on. Now it is set of even natural number, so it is not exactly same as our codomain n. Here codomain is given n, so it is not same as n and therefore this function is not onto. बराबर, ये function onto नहीं है. Example number 9, function is given r2r fx equal to 2x, prove it is 1 1 and onto both. So for 1 1, first let x1 x2 belongs to r and f of x1 is equal to f of x2. Now f of x1, so it is 2x1 because formula is fx equal to 2x. F of x2 means it is 2 times x2. From left and right, if we cancel out 2, then it gives x1 equal to x2 and therefore f is 1 1. Now for onto, तो for onto यहाँ पर हम जनरल में ट्राई करते हैं. Let y belongs to r, that is codomain of a function, and fx equal to y. बराबर, अब हमको क्या करना होगा, y एक r का एलिमेंट है तो वो कौन से एलिमेंट की इमेज है वो हमें फाइंड करना है और क्या वो एलिमेंट आपके डोमेन में प्रेजेंट है वो हमको चेक करना है. तो fx equal to y, fx is what, 2x, तो 2x equal to y. Now 2x equal to y, it means x equal to y by 2. अब देखो आपने क्या बोला था, y belongs to r, तो y is real number, so if we divide by 2 then also it is real number. Okay, and one more thing, f of y by 2, f of y by 2 is what, so it is 2 times y by 2, 2 times y by 2 is y. तो हमने क्या किया, y कौन से नंबर का इमेज है, तो इट इज इमेज ऑफ y by 2 which is member of domain, that is r, and so we can say the function is onto. y एक नंबर है, वो कौन से नंबर का इमेज है वो हमने फाइंड कर लिया है और वो जो नंबर का इमेज है वो ऑलरेडी हमारे डोमेन में है, ऐसा भी हमने प्रूव कर लिया है. एंड सो वी से द फंक्शन इज 1 1 and onto both. Okay, and for that we use another word is, if function is 1 1 and onto both, then we say the function is bijective. Now moving on, number 10, and number 10 is show that the function n to n, means here function is given from n to n and f1 is equal to f2 is equal to 1, so f1 and f2
both are given 1, and then formula of fx is given x minus 1, but this one is for x greater than 2. Prove it is onto but not 1 1. ओके, तो जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है वहां पर आपको f1 का वैल्यू 1 दिया गया है, f2 इसका भी वैल्यू आपको 1 दिया गया है, तो इसका मतलब हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट हैं जिनका इमेज सेम नंबर है, and therefore we can say the function is not 1 1. Now again here our domain is n, so we can find range. बराबर, जब भी हमारा डोमेन n या तो z होगा तो हम रेंज फाइंड कर लेंगे. तो डोमेन ऑफ फंक्शन इज n, it is 1 2 3 4 5 6 and then so on. Now formula for f1 is given 1, f of 2 is also given 1, and then for greater than 2 the formula is given x minus 1. This one is for x greater than 2. So if we find f of 3, then it is 3 minus 1, that is 2. If we find f of 4, then it is 4 minus 1, that is 3. Then f of 5 is 5 minus 1, that is 4, and so on. So what is range of function? So range means set of answers. So our answer is 1, then again 1, but we write one element one time. 1, then 2, then 3, then 4, and so on. So our range is exactly same as n, that is our codomain, and so we can say the function is onto. So this time the function is not 1 1, but it is onto. Next one is example number 11. Show that the function f from R to R defined as fx equal to x square is neither 1 1 nor onto. अब हमें प्रूव करना है ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना तो ये onto है. तो 1 1 प्रूव नहीं करना है, मीन्स इट इज मैनी वन, तो हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा? डिफरेंट एलिमेंट बट सेम इमेज. तो हम नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, x इक्वल टू -1, x1 equal to -1, and another number is x2 1. Now here you can see that x1 is not same as x2. Now what about f of x1? So f of x1 is -1 square. -1 square is 1. f of x2 is 1 square. This one is also 1. तो हमारे पास जो एलिमेंट थे वो तो डिफरेंट थे, बट यहाँ पर दोनों का इमेज तो सेम आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन इज नॉट 1 1. बराबर, ये फंक्शन 1 1 नहीं है. अब रेंज फाइंड करते हैं. तो अगर आपको रेंज डायरेक्टली पता है तो बेटर, ये अदरवाइज हम रेंज फाइंड करते हैं. तो लेट y belongs to R and fx equal to y. Now fx equal to y, it means x square equal to y. X square equal to y, and therefore x is square root of y. Now y is in square root, and therefore y is greater than equal to 0. तो हमने जो y belongs to R लिया था, जिसको हम इमेज बनाना चाहते थे, वो इमेज का मिनिमम वैल्यू 0 है या तो वो उससे अप है. इट मींस आपका जो रेंज है, जो y की वैल्यू है, वो क्लोज फ्रॉम 0 ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट है. सो इट इज not exactly same as R, and therefore it is not onto. This function is not onto function. This one is not onto function because नेगेटिव नंबर, जो आपके नेगेटिव रियल नंबर है, वो किसी भी नंबर का इमेज नहीं होंगे. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. एग्जाम्पल नंबर 12. Now example number 12 is show that f from n to n given by fx equal to x plus 1 if x is odd and x minus 1 if x is even, it is both 1 1 and onto.
तो यहाँ पर हमने जो अभी फंक्शन की फॉर्मूला देखी थी, वो फंक्शन की फॉर्मूला थी x11 प्रूव करने के लिए x1 नॉट इक्वल टू x2 implies fx1 नॉट इक्वल टू fx2। या तो फिर आप प्रूव करो fx1 इक्वल टू f of x2, f of x1 इक्वल टू f of x2 implies x1 इक्वल टू x2 प्रूव करो। अब यहाँ पर हम ये दोनों डेफिनेशन का यूज करेंगे। क्यों दोनों डेफिनेशन का यूज करना पड़ेगा आपको? बिकॉज when we say let x1 x2 belongs to n, आपने दो नंबर सिलेक्ट करिए from your domain n। अब यहाँ पर आप लिखेंगे fx1 f of x1 is equal to f of x2। तो जैसे ही आप f of x1 लिखेंगे, आपको ये दो फॉर्मूला दी गई है, ऑड नंबर के लिए अलग, इवन नंबर के लिए अलग, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि x1 एंड x2 इवन है या तो ऑड है। तो यहाँ पर हमको केस दिखाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं, और फर्स्ट केस में ऐसा बोलते हैं कि चलो बोथ आर इवन, बोथ x1 एंड x2 इवन, बराबर, दोनों नंबर इवन है, ऐसा एक्सेप्ट करते हैं। सेकेंड केस बनाते हैं बोथ x1 एंड x2 आर ऑड, और थर्ड केस बनेगा वन इज इवन वन इज ऑड। तो इसमें हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एक्सेप्ट करते हैं कि भाई x1 इज इवन, कोई एक को आप इवन एक्सेप्ट करो, एंड जो सेकेंड है उसको आप ऑड एक्सेप्ट कर लो, बराबर। इसमें दो केस नहीं बनाने हैं, आप एक एक एक्सेप्ट कर लो। नाउ बोथ x1 एंड x2 आर इवन, तो इन दिस केस f of x1 इक्वल टू f of x2। नाउ नंबर्स आर इवन, तो इवन के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज होगी? x minus 1, सो हियर x1 minus 1, एंड f of x2 के लिए x2 minus 1। फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट -1 हम कैंसिल कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2। तो ये केस में तो हमने प्रूव कर लिया fx1 इक्वल टू fx2 implies x1 इक्वल टू x2। नेक्स्ट, if both are odd then what? So for that f of x1 equal to f of x2, both are odd numbers, so definition is x1 plus 1, and here it is x2 plus 1. If we cancel plus 1 from left and right, then we get x1 equal to x2. So in this case also f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2, वो prove हो चुका है। Third case is x1 is even and x2 is odd, means this time we know that numbers are different because one number is even and second number is odd, so definitely हमको पहले से पता चल चुका है कि ये दोनों नंबर डिफरेंट है। तो हम ये जो फर्स्ट डेफिनेशन है इसका यूज करेंगे, बराबर, इनका यूज करके हम प्रूव करेंगे फंक्शन 1 1 है। तो x1 नॉट इक्वल टू x2, अब हम प्रूव करते हैं कि भाई fx1 नॉट इक्वल टू f of x2। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन यूज करते हैं, लेट f of x1 इक्वल टू f of x2। हमने एक्सेप्ट कर लिया fx1 इक्वल टू f of x2। एक्चुअली हमको प्रूव क्या करना है? fx1 not equal to fx2। Now what is f of x1? तो x1 is even, if it is even then it gives x1 minus 1, and x2 is odd तो x2 plus 1। अब यहां से आपको मिल जाएगा x1 is equal to x2 plus 2। Now you can see this one x1, ये जो नंबर है वो नंबर कौन सा है? इवन नंबर है, बराबर, x1 is even number, x2 plus 2, x2 is odd number, and if we add 2 then also it is odd number। तो आपका लेफ्ट साइड इवन नंबर है, राइट साइड आपका ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ इट इज नॉट पॉसिबल, बराबर, दिस वन इज नॉट पॉसिबल कि एक साइड आपका इवन है और एक साइड ऑड है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। सो दिस वन इज नॉट पॉसिबल, and if it is not possible then what we have to write, जो हमने एक्सेप्ट किया था वो ही रॉन्ग था, बराबर, हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग था। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा f of x1 is not same as f of x2 and so
in all three cases we have done that the function is 1 1. बराबर, ये हमने प्रूव कर लिया कि भाई फंक्शन 1 1 है। अब ऑन टू प्रूव करने के लिए, तो ऑन टू प्रूव करने के लिए वापस हमको डोमेन एन दिया गया है, तो उसका हम थोड़ा फायदा उठाते हैं और रेंज फाइंड कर लेते हैं। सो हियर डोमेन ऑफ अ फंक्शन is given n, it is 1 2 3 4 5 6 and so on. Now we find f of 1. F of 1, so it is odd number, so our answer is 1 plus 1, that is 2. Then we find f of 2, even number, so our answer is 2 minus 1, that is 1. Then f of 3 is odd number, so 3 plus 1, that is 4. Then we find f of 4. F of 4, it is even, so 4 minus 1, answer is 3. Then f of 5, it is odd number, so our formula is 5 plus 1, that is 6. F of 6, 6 minus 1, so it gives 5, and ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका रेंज ऑफ फंक्शन आया है वो यहाँ पर आप स्मॉलेस्ट नंबर देख सकते हैं, 1 है, आफ्टर दैट 2, देन 3 एंड देन 4 एंड 5 एंड 6। तो यहाँ पर जो हमको आंसर्स मिल रहे हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स है, और आपको कोडोमेन भी ऑलरेडी नेचुरल नंबर दिया गया है, तो इट इज सेम एज कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन, एंड देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। बराबर, ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। Now example number 13. Example number 13 is show that an onto function f from 1 to 3 to 1 to 3 is always 1 1. Means अगर एक फंक्शन है जो जिसका डोमेन 1 2 3 है, उसका कोडोमेन भी 1 2 3 है, और वो फंक्शन ऑन टू है, तो आपको प्रूव करना है वो फंक्शन 1 1 भी होगा। अब यहाँ पर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपका डोमेन एंड कोडोमेन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। मीन्स इट इज फॉर फाइनाइट। हो सकता है आपका डोमेन 1 2 3 हो और आपका कोडोमेन में दिया हो ABC, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, देन इट इज ट्रू, एंड इवन इट इज ट्रू इन जनरल। अगर फाइनाइट सेट है और वहां से आप फाइनाइट सेट पे जा रहे हैं, दोनों में नंबर ऑफ 1 2, मतलब फाइनाइट सेट है, n एलिमेंट्स है, और यहाँ पर भी आपके पास n एलिमेंट्स है, अगर वो फंक्शन ऑन टू है तो डेफिनेटली वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। इसका रिवर्स भी ट्रू है जो हमारे एग्जाम्पल नंबर 40 में दिया गया है, इफ द फंक्शन इज 1 1 देन इट मस्ट बी ऑन टू। बराबर, सो इट इज ट्रू फॉर फाइनाइट सेट। ए में जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट अगर बी में है, एन ए इक्वल टू एन बी, and if the function is 1 1 then it is on to, and if the function is on to then it is 1 1। बराबर, दोनों साइड से ये ट्रू है, बट अभी तो हमको 1 2 3 सेट दिया गया है। तो फर्स्ट here given that function is on to, now function is on to means what? तो function is on to, it means f1, f of 2 and f of 3 are elements from set 1 2 3। बराबर, और ये डिफरेंट एलिमेंट भी होने चाहिए, क्योंकि आपको ऑन टू फंक्शन बोला गया है ना, फंक्शन इज ऑन टू मीन्स f1 f2 एंड f3 ये तीनों डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए फ्रॉम 1 2 3, क्योंकि अगर ये सेम हो गया तो फिर हमारा एक एलिमेंट रह जाएगा, एक्चुअली वही हमको प्रूव करना है। तो f1 f2 एंड f3 आर एलिमेंट्स फ्रॉम 1 2 3। वी वांट टू प्रूव द फंक्शन इज 1 1। अब हम प्रूव करना चाहते हैं फंक्शन इज 1 1, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं और हम ऐसा एक्सेप्ट करते हैं कि लेट f इज मैनी वन। बराबर, हमने रॉन्ग एज्यूम किया है, कॉन्ट्राडिक्शन करना चाहते हैं, तो सपोज f इज मैनी वन। नाउ मैनी वन फंक्शन मीन्स व्हाट? नंबर्स डिफरेंट, एलिमेंट डिफरेंट, बट इमेज सेम हो सकता है। बराबर, तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर दो एलिमेंट ले लेते हैं,
f is many one, and suppose f of 1 इज सेम एज f of 2. हमने ये एक्सेप्ट किया कि भाई मान लो कि f1 एंड f2 सेम है, एंड देयरफॉर फॉर रिमेनिंग जो हमारा सेट डोमेन था उसमें 3 एलिमेंट थे, तो उसमें जो हमारा रिमेनिंग एलिमेंट है, फॉर रिमेनिंग एलिमेंट 3 belongs to domain of f, that is f of 3 belongs to कोडोमेन ऑफ f. जो हमारा रिमेनिंग एलिमेंट है उसका जो आंसर होगा वो कोडोमेन ऑफ f में होगा. बट हमने पहले ये एक्सेप्ट किया है कि f1 एंड f2 सेम है, तो ये एक एलिमेंट हमने कवर किया कोडोमेन का. f of 3 भी हमने एक और एलिमेंट कवर किया कोडोमेन का, बराबर. बट हमको जो सेट दिया गया है उसमें तो 3 एलिमेंट्स है, और यहाँ पर तो हम ये बोल रहे हैं कि इसमें 2 ही एलिमेंट है. तो इसका मतलब हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं जो हमको डेटा दिया गया है कि भाई ये 3 डिफरेंट एलिमेंट है. यहाँ पर हम बोल रहे हैं नहीं, हमारे तो f1 एंड f2 वो दोनों एक एलिमेंट है, एंड f3 सिर्फ 2 ही एलिमेंट कोडोमेन के कवर हुए हैं, बराबर. 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी का इमेज है. तो देयरफॉर f is not onto, ये हमको कॉन्ट्राडिक्शन मिला. f is not onto, therefore we have contradiction, therefore we have contradiction, and therefore our supposition is false. Our supposition is false. What is our supposition? Our supposition is function is many one. So this false means f is 1 1. बराबर. नेक्स्ट में चलते हैं. शो दैट 1 1 फंक्शन f from 1 to 3 to the set 1 to 3 must be on to. अगर ये फंक्शन 1 1 है तो वो कंपलसरी on to भी होना चाहिए. तो here 1 2 and 3 belongs to domain of function and f is 1 1. f is 1 1, therefore f1 f2 and f3 are 3 different elements of 1 2 and 3. This one is कोडोमेन, बराबर. क्योंकि हम 1 2 3 डोमेन में ले रहे हैं, फंक्शन 1 1 है, तो f1 f2 एंड f3 ये तीनों डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए फ्रॉम कोडोमेन. इट मींस इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई अगर आप f1 f2 एंड f3 ये तीन का यूज करके अगर आप सेट बनाएंगे जिसको हम रेंज ऑफ फंक्शन बोलते हैं, तो ये एक्चुअली कहाँ से होंगे? तो दे आर एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट 1 2 3, और ये 3 डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो ये कोई ना कोई एलिमेंट फ्रॉम द सेट 1 2 3 होंगे. इसका मतलब आपका रेंज ऑफ फंक्शन एंड आपका कोडोमेन दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया? द फंक्शन इज ऑन टू. ओके, so this one is our example number 14. Now after that, number 1, question number 1 is show that the function f from r star to r star defined by fx equal to 1 upon x is 1 1 and onto, where r star is set of non-zero real numbers. That is, r star is actually r minus singleton 0. Prove this function is 1 1 and onto. So for 1 1, let x1 and x2 belongs to r star and f of x1 is equal to f of x2. Now f of x1 is 1 upon x1. F of x2 is 1 upon x2 because here x1 and x2 are not 0.
and therefore we can write x1 equal to x2, and so we can say function is 1 1, बराबर, ये फंक्शन 1 1 है। अब हमको प्रूव करना है ये फंक्शन ऑन टू है, तो फॉर दैट लेट y बिलोंग्स टू r स्टार, दैट इज हमने एक कोडोमेन से एलिमेंट लिया है और हमको प्रूव करना है इट इज इमेज ऑफ एलिमेंट फ्रॉम डोमेन। तो y बिलोंग्स टू r स्टार and fx equal to y. Now what is fx? So fx is 1 upon x. 1 upon x is equal to y. So what is x? X is equal to 1 upon y. अब यहाँ पर आपने एक्सेप्ट किया था वो y belongs to r स्टार है और r स्टार का मतलब है r माइनस सिंगलटन जीरो, सो इट इज 1 upon नन जीरो नंबर, 1 upon नन जीरो रियल नंबर, बराबर, ये रियल है बट ये जीरो नहीं है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो डेफिनेटली आर में हो सकता है, बराबर, डेफिनेटली ये नंबर आर में होगा क्योंकि ये एक्चुअली जीरो भी नहीं होगा, 1 upon y है। तो यस इट इज इन आर स्टार। एंड वन मोर थिंग, व्हाट इज f of 1 upon y? तो f of 1 upon y is 1 upon 1 by y, so it is y। तो अगर आपके पास एक एलिमेंट है y कोडोमेन का, then it is image of 1 upon y which is in your domain, and so we can say the function is onto, बराबर। इसका दूसरा तरीका ये भी है, अगर आपको ग्राफ पता है तो भी आप कर सकते हैं। अगर मैं 1 upon x का ग्राफ ड्रॉ करूं जो डोमेन दिया है आर स्टार में, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ये एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका रेंज होगा माइनस इनफाइनाइट टू ओपन जीरो एंड जीरो टू ओपन इनफाइनाइट, दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट माइनस सिंगलटन जीरो, दैट इज r minus 0, so function is on to, बराबर। so function is 1 1 and on to both, that is it is bijective function। अभी एक और क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि if we replace और डोमेन बाय n, अगर आपने डोमेन चेंज कर लिया, डोमेन इज n एंड कोडोमेन इज सेम r स्टार, देन व्हाट कैन यू से अबाउट दिस फंक्शन? तो 1 1 चेक करते हैं सबसे पहले। x1 x2 belongs to n and f of x1 is equal to f of x2। now f of x1, so it is 1 upon x1, f of x2, so it is 1 upon x2। now 1 upon x1 equal to 1 upon x2, so x1 equal to x2 and x1 equal to x2, it means function is 1 1। now here our domain is n, तो जब भी हमारा डोमेन n होगा तो हम ट्राई करेंगे रेंज फाइंड करने का। तो डोमेन ऑफ फंक्शन इज n, that is 1 2 3 4 5 and so on। our formula is fx equal to 1 upon x, so if we find f1 then it is 1 upon 1, that is 1, f of 2 is 1 upon 2, f of 3 is 1 upon 4, actually 1 upon 3 and so on। so what is range of a function? So range of a function is set containing 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 and so on। so it is not same as r minus singleton 0, because कोई भी नेगेटिव नंबर ये जो फंक्शन है उसका इमेज नहीं बनेगा, इवन जीरो भी नहीं है। ओके तो बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो आपके इमेज नहीं बनेंगे। सो रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट सेम एज r minus singleton 0 and so we say the function is not onto। ओके तो ये जो फंक्शन है आपका वो onto नहीं है।